हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद फन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर साउंड। साइंस का साउंड चैप्टर का क्वेश्चन आज डिस्कस होने जा रहा है। एसेस जोन फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड ऑफ साउंड इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? वाटर, एयर, स्टील, वैक्यूम। देन द आंसर इज स्टील। कौन से मीडियम में साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है? तो साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड मीडियम में होता है। तो वाटर लिक्विड है, एयर गैसियस है, स्टील सॉलिड है और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। तो आंसर स्टील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इज लेस देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज, between 20 hertz and 20,000 hertz. Then the answer is option number D, between 20 hertz and 20,000 hertz. Sound is a kind of power, work, energy or force. Answer is option number C, energy. Next question, this part of the ear passes the vibration to the auditory nerves, outer ear, inner ear, middle ear or none of these. Answer is option number B, inner ear. कौन सा पार्ट ईयर का जो है जो वाइब्रेशन को ऑडिटरी नर्व्स को पास करता है? तो इनर ईयर पास करता है, कॉक्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ द मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, क्वालिटी ऑफ द साउंड। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो स्टेट ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, गैसियस में उससे कम और वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करता है। तो साउंड बिटवीन 20 हर्ट्ज, साउंड बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, तो बिलो 20 हर्ट्ज को इंफ्रासोनिक कहते हैं और अबव 20,000 हर्ट्ज को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और जो हम लोग सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। देन द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रासोनिक साउंड। When an object vibrates with low frequency, the sound produced is shrill, loud, flat, or there is no relation between sound and frequency. Answer is option number C, flat. Next question, the sound waves do not travel through vacuum, ice, water, steam. तो आइस सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, स्टीम गैसियस हो गया। तीनों में ट्रैवल करेगा लेकिन वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, तो वैक्यूम में साउंड वेव्स डू नॉट ट्रैवल। Above which value a sound become noise? 60 decibel, 90 decibel, 50 decibel or 150 decibel. Answer is option number B, that is 90 decibel. Next question, ultrasonic devices work on which of the following frequency? तो अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है? तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो अल्ट्रासोनिक डिवाइस उसी पर काम करेगा, दैट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी। Next, fill in the blanks type question. First question, which is the unit of loudness? Then decibel is the unit of loudness. Second question, sound travels from one place to another with the help of medium. The unpleasant and discomfort sound is called noise. Next question, which type of vibration make the sound musical? Then regular vibration make the sound musical. Next question, when we decrease the length of the string instrument, its pitch increases. Next question, the speed of sound is highest in solid medium. Solid medium में highest होता है. And then what is the SI unit of frequency? Then the hertz is the SI unit of frequency. Next, give reasons for the following. First question, we cannot hear sound in space. आपको इसका रीज़न देना है why we can't hear sound in space. Then we cannot hear sound in space because there is no air or any other medium present in space and sound cannot travel in vacuum. क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता इसलिए साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम साउंड्स आर नॉइज वाइल सम आर म्यूजिक टू आवर ईयर्स। कोई नॉइजी होता है, कोई म्यूजिकल होता है हमारे ईयर के लिए। क्यों ऐसा होता है? Then this is because of difference in vibration. The irregular vibration makes the sound noisy that are unpleasant to our ears, while the regular vibration makes it musical. Then third question, air is not an effective medium for the sound to travel.
एयर क्यों इफेक्टिव मीडियम नहीं है साउंड को ट्रेवल करने के लिए? Then this is because the molecules in the air are loosely packed at large distances. That decreases the speed of sound in air, while sound travels most effectively in medium where the molecules are tightly packed. एयर में मॉलिक्यूल जो है दूर दूर रहता है, लूजली पैक्ड होता है, तो जिसके कारण साउंड का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए एयर इफेक्टिव मीडियम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स. अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरह के साउंड क्यों प्रोड्यूस करते हैं? देन दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन वाइब्रेशन, एज वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएट डिफरेंट साउंड्स. अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग अलग तरह के वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण अलग अलग तरह का साउंड निकलता है. लास्ट क्वेश्चन, आवर इनएबिलिटी टू हियर इंफ्रा एंड अल्ट्रासोनिक साउंड इज गुड फॉर अस. हम लोग इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड को नहीं सुन सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा बात कैसे है? देन दिस इज बिकॉज बोथ द साउंड्स अफेक्ट आवर नर्वस एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम. हमारे नर्वस और कोऑर्डिनेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है दोनों साउंड. Infrasonic sounds cause nausea, restlessness, headaches, and tiredness. On the other hand, ultrasonic sounds damage the human ears that may lead to hearing problems. दोनों का अलग अलग डिसएडवांटेज है, ठीक है. दोनों हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि दोनों हमारे नर्वस और कोऑर्डिनेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है. देन स्टेट द डिफरेंस. डिफरेंस वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, म्यूजिक एंड नॉइज में डिफरेंस बताना है. Then music is pleasant sound with regular vibration, while noise is unpleasant sound with irregular vibration. Next, audible and inaudible sound. Audible sound for human is in the range of 20 Hz to 20,000 Hz, while inaudible sound ranges below 20 Hz or greater than 20,000 Hz. यहाँ पर inaudible एक साथ होगा. Next question, infrasonic and ultrasonic sound. Difference between infrasonic and ultrasonic sounds. Infrasonic sounds are those whose frequency is lower than 20 Hz, while ultrasonic sounds are those whose frequency is greater than 20,000 Hz. Next question, difference between frequency and amplitude. Frequency refers to the number of vibrations made in sound, and its SI unit is meter, while the amplitude is the maximum displacement of vibrating object on either side of mean position, and its SI unit is Hertz. This is the difference between frequency and amplitude. The next question, difference between pitch and loudness. Pitch is the characteristic which determines the shrillness or depth of a sound, which is determined by the frequency of the sound waves, while loudness is the loudness or softness of a sound, which is determined by the amplitude. Then the last question for today is a stringed instrument and wind instrument में difference बताना है. Then string instruments are those that produce musical sounds through vibrating strings, for example guitar, sitar, violin, etc. While wind instruments are those which produce musical sounds through the action of wind on the instrument, for example flute and saxophone. This is all about today. और इसके आगे का पार्ट 2 में अपलोड होगा. So be connected to our channel, subscribe our channel to get notification. Thank you.